In last session, we have completed Accounting Standard 5 and Accounting Standard 4, that is the contingencies and events occurring after balance sheet date, and Accounting Standard 5 is net profit or loss for the period, prior period items, and changes in accounting policies. Friends, today we are going to start with the Accounting Standard 11, that is the effects of changes in the foreign exchange rate. And this accounting standard is very important because this is divided in three parts. Number one is forward contract. First one is a foreign exchange transaction. Second one is integral and non-integral operations. That is a foreign operations. And third one is a forward contract. Actually, operations we are going to see it in the branch accounting. And here we are going to complete with two parts. That is the foreign exchange transactions. And second one is your forward contracts. We are going to see some entries also. Those part which have not completed in the regular lecture, we will complete over here. I will take some extra questions with journal entries for forward contracts. Okay. So students, happy Diwali to all of you. And I know this festival, all of your friends are celebrating, but you are attending these classes, and yes, many more things are going in the surrounding, but still you are focused on your subject. That is very important in the CA course, that you are 100% focus on your study is required for this CA course. And I'm happy to know that other students who are very serious about their studies, they are attending these live classes. Okay. Now let's start with the Accounting Standard 11. That is a forward effects of changes in the forward exchange contracts, foreign exchange transactions. Okay. So friends, introduction part, some important terms we have to see, then foreign currency transactions. Then we are going to see forward exchange contracts also. And what is important, foreign operations. And last one is disclosure parts. So introduction of this accounting standard. Let's quickly revise all these things. Anyone wants to tell me what is the importance of this? Or yes, Kashish, बेटा आपको कुछ याद आ रहा है क्या ये स्टैंडर्ड का? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी दिवाली टू यू. Happy Diwali and happy Govardhan, sir. सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में जो मेन हम लोगों के डिफरेंसेस आते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके डेट ऑफ सेटलमेंट, और बीच में अगर डेट ऑफ बैलेंस शीट आता है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए ये स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है. जैसे ट्रांजैक्शन, ऑपरेशंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों में. कब पढ़ा था आपने स्टैंडर्ड? सर ये वाला स्टैंडर्ड आई थिंक अप्रैल में नहीं, रिवाइज कब किया था आपने? डिवाइस सर आज मॉर्निंग में करा. अच्छा, और एक मॉर्निंग बार में. वीक में करा. ओके. कितना टाइम लिया था आपने स्टैंडर्ड रिवाइज करने को? सर मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 45 मिनट्स से लिए थे इस वाले को सिर्फ, लेकिन मैंने थ्योरी देख पाई थी मैं. इलस्ट्रेशंस आप मेरे साथ करोगे? ओके, जी सर. वेरी गुड बेटा. एंड यस, 100% करेक्ट. क्या आप भूल चुके थे और जो आप पढ़ते टाइम आपको याद आ गया था, ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहती हो? हाँ सर, मैं जैसे हेजिंग और स्पेक्यूलेशन का डिफरेंस मैं भूल गई थी. और क्या कहते हैं, और ट्रांजैक्शंस में एक बार वो मॉनेटरी आइटम वाला एक पॉइंट था, वो मैं भूल गई थी जब वो अच्छा, डेप्रिसिएबल में और नॉन अदर देन डेप्रिसिएबल वाला. 46 है, पैरा 46 है. यस सर, हाँ वो एक्सेप्शनल वाला जो था. वेरी गुड बेटा, देखने के बाद याद आया. ओके. यस. How many of you have done this accounting standard? Means you can recall these accounting standards. Yes, raise your hand. I can. Ayushi, yes, beta, very good. Shoaib, very good, beta. Om, Swati, अरे वाह. अच्छा. And other students, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है. So S11, foreign currency transactions, foreign operations, and forward exchange contracts. It is divided in three parts. Foreign currency transactions, foreign operations means what? Joint venture, subsidiary,
associates, it is called as branch accounts, it is called as foreign operation. And forward exchange contract, we have two terms here we have to use in this. That is the financial management term, that is the speculation and hedging. So we are going to see these two terms over here. We have exactly 1 hour to complete this accounting standard, 1 hour 15 minutes, and another accounting standard 15 minutes break I will give, and then after that 1 hour I will take for accounting standard 22, that is the taxes on income. After that, beta, we are going to meet on 30th of November, I think so, because next two lectures, next four sessions, I'm not going to take those sessions. One is consolidation, I think, and one is revenue based accounting standard, that is accounting standard 7 and accounting standard 9. So other faculty will take over these two remaining standards and consolidated financial statements. अच्छा है क्या मेरा? अच्छा 14-16 को नहीं हो और वापस से आ जाऊंगा फिर. ठीक है, ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक. दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैं हूँ आगे के, उसके बाद बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए और कंसोलिडेशन के लिए शायद से मैं नहीं रहूंगा. ओके, सो S11, यस, तो S11 बेटा क्या बताता है? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, बट इट डज नॉट डील्स विद दी which currency that you are going to follow. See, we are not talking about any dollar or rupees you should follow. No, currency we are not talking about. Currency whichever you want to continue with, but normally we consider domestic currency. For example, in India, we will consider rupees. If my head office is in USA, I will consider dollars. So this is very simple. Presentation in cash flow statement, we are not going to talk it about, and exchange differences arising from the borrowings. Okay. And restatement into another currency for the convenience of the user. For example, suppose for the convenience, I'm also restating the balance sheet in the dollars. Okay. That is my, conversion. Why I'm doing this? Because I want to show my reader ki if suppose if I'm doing this business in dollars, whatever is the my restatement into another currency, what will be the my currency amounts, then beta restatement is not allowed over here. Okay. तो रीस्टेटमेंट इसमें नहीं है. आ, एक अयाज, आप हो वहां पे? अयाज जी, बोर्ड, अयाज, एक ही मिनट. एक बार अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए ना. इधर वो बच्चे बोर्ड ड्रॉ करते हैं तो उसका कोई तो फंक्शन है, तो बोर्ड नहीं ड्रॉ करने का. हाँ, हाँ, तो वो व्हाइट बोर्ड लाते हैं तो वो मत लाने दीजिए, सिर्फ स्क्रीन ही रहेगा. ऐसा कुछ तो है फंक्शन. अयाज, हो गया क्या? मनीष को पता है, शायद से बहुत से लोगों को पता है कि वो व्हाइट स्क्रीन नहीं आने के लिए क्या करना पड़ता है. नहीं नहीं, स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, कुछ है उसमें, स्टूडेंट्स को भी नहीं हो सकता ये व्हाइट स्क्रीन का ऑप्शन. हो गया? एक बार मनीष से बात कर लीजिए. इंपॉर्टेंट टर्म्स, कोई तो व्हाइट स्क्रीन का ऑप्शन ओपन कीजिए, हो रहा है क्या देखो एक बार आपके इसमें व्हाइट स्क्रीन, कोई भी स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, हो रहा है क्या देखो कशिश. हाँ, ठीक है. नहीं हो पा रहा है ना अभी? यस, ठीक है.
So what are the important terms? Foreign currency transactions. Yes. Ayushi, read beta. Yes, foreign currency transactions, transactions which is denominated in or required settlement in foreign currency. Okay. So foreign currency transaction means denomination which requires the settlement in foreign And currency. foreign currency. Yes. Second one. Monetary items, money held, assets and liabilities to be received or paid in fixed and determinable amount. So do you know this definition? Debtors, creditors, we'll call it as them monetary item. Land is non-monetary because amount is not fixed. The book value and carrying amount are not same. So got the Yes, difference between monetary and non-monetary? If book value and yes, carrying book value and realizable value are same. For example, debtors 1 lakh rupees are actually showing in the books, and receivable actual is also 1 lakh. But tell me plant and machinery in book different value, and in reality if you are going to sell it, it has a different value. Correct? yes. So plant and Book machinery value, किसमें आएगा? Monetary or non-monetary? non-monetary, plant and machinery. Okay. Third one, non-monetary item other than monetary items. Next, foreign operation. Read. Foreign operations, a subsidiary, associate, or joint venture or branch of reporting enterprise in other country. Okay. Next. Forward exchange contracts, agreements to exchange different currencies at specific forward rates. So if you enter into the forward rate, for example, I want $1 after 3 months, and I enter into a transaction that I want $1 after 3 months at rupees 90. Then, beta, it is we are calling it as a forward exchange contract. Then in after 3 months, if the price is 95, it will be your benefit because you are buying it at 90 rupees. And suppose if at that time price is 88, you will be in loss at rupees 2. But you are doing hedging. Hedging means you are minimizing your risk and you are getting that dollar at 90 rupees. But some people are doing it at for speculation purpose. Speculation मतलब सट्टा लगाने के लिए. कुछ लोग हाँ, उसके ऊपर लॉटरी खेलते हैं, मतलब एक टाइप का. एंड कुछ लोग इसको खुद को रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं. गॉट द कॉन्सेप्ट? yes, sir. हाँ जी, आगे बढ़िए. हम्म. Integral and non-integral. Integral operations means an extension of reporting enterprises operations. Non-integral operations are operations which are not integral. हम्म. सो क्या होगा ये बताइए. व्हाट इज द मीनिंग? इंटीग्रल मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? सर इंटीग्रल ऑपरेशंस मतलब कि जो आपके एंटरप्राइज के साथ जो जुड़ के काम करता है जो एक साथ होते हैं और नॉन इंटीग्रल मतलब कि वो अलग अलग बेसिस पे अकाउंटिंग्स और वो सब कुछ होता है ओके बेटा, वेरी गुड. नॉन इंटीग्रल मतलब इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना अपना हाँ चलाएगा. इंडिपेंडेंट हाँ करेक्ट है. सो यस इसको हम सर लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रल. नॉन इंटीग्रल वो इंडिपेंडेंट होता है वेरी गुड बेटा. चलिए, सो एनी डेफिनेशन दैट यू आर नॉट गेटिंग इट? नो सर आई एम गेटिंग ऑल Yes, beta, raise your hand if you are not getting any definition. Any one of you. Sai, Kiran, Deepika, if you are not getting any definition, you can raise your hand. Pooja, everything is clear, beta Pooja? Yes, sir. कुछ भी difficulty नहीं है. No, sir. Good. Then Pooja ji, read the foreign currency transactions. This paragraph. Foreign currency transaction which is denominated in as required settlement in a foreign currency. Hmm. It includes buy, sales, goods or services which price is denominated in foreign currency. Borrows land fund when the amount is in foreign currency. Become a party to an unperformed Hmm. forward exchange contract, otherwise acquires, disposes assets, or incur and settlement liability in foreign currency. Hmm. 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 ठीक है.
So you are getting this definition. Yes, sir. Denomination or settlement is required in the foreign currency. Buy sell goods. Chalo. Now, initial recognition, value at balance sheet, and at settlement date. We are doing this accounting on 3 days. Initial recognition means when you enter into the transaction. Pooja ji, correct hai? At Yes, sir. transaction date. So first one, we are recording it at a spot rate. अभी आपको spot rate वगैरह ये सब knowledge है, ऐसा मैं assume करके आगे बढ़ता हूँ. So I'm not going to explain you what is a spot rate and all these things. Whenever there is a transaction date, you will record it. Second one, on value of balance sheet date, that is on 31st March, you will record the monetary item, that is debtors at closing rate, debtors or creditors, and closing rate if not accurate, then you will consider realizable rate. And non-monetary items carried at historical cost or carried at fair value, and contingent liabilities are there. For this, we will see the rate on the date of transaction. For fair value calculation, we are considering the rates for which the values are determinable and determined at the closing rate. And what is the settlement rate? At settlement rate, the difference will be transferred to profit and loss account. Correct? Eh? Yes, sir. And there is, Yes, sir. if same accounting period hoga, तो profit or loss will be recorded in the same accounting period. But if your transactions is not in the same accounting period, then in that case, beta balance sheet date hoga, तो transaction date and balance sheet date in the current period, and set balance sheet date and settlement date will be in the next period. We are going to see some examples, and there is a para 46A, which is the exception. And what is the exception? If it is related to long-term foreign currency monetary items, we will consider as a depreciable asset. Then we will add the difference or deduct the losses. Profit जो होगा वो हम लोग sorry उल्टा बताया. Profit will be deducted and losses will be added. And in case of non-depreciable asset, we will open the foreign currency monetary item translation difference account. It's very simple. We are going to see some examples. चलो आप लोग सॉल्व कीजिए बेटा ये, और जल्दी से मुझे आंसर बताइए. यस, सब लोग सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे. What is the asset value at the end of the first year, and what is the asset value at the end of the second year? चलो सॉल्व कीजिए फटाफट. पूजा आता है आपको ये? सर हाँ साई किरण. यस साई किरण. asset is purchased for $4 when exchange rate $1 is equal to 50 rupees. Year end, first year end, exchange rate is 55 55 per rupees. dollar. Second year end, 58 per dollar. Life of the asset is 5 years. Can you tell me the answer? Dollar difference, we will add it in the asset. As we can see here, the life of the asset is depreciable asset. First year dollar difference is 5 rupees, sir. 5 rupees. 5 rupees loss or profit? 5 rupees for us, for Indian, it is profit, sir. No, it is loss, no? Because you are buying the asset and you have to pay on settlement 55 rupees, no? When you buy this asset, that dollar is a 50 rupees. But when you are settling this transaction, no, I thought I'm selling, sir. We are buying, okay. Okay, asset is purchased, no? Then loss, sir. 5 rupees loss. Yes. So asset account debit, in your books, you are going to record $1 is equal to $4 when dollar is 50 rupees. So 200 rupees is the asset value, correct? To loan account. 200 rupees. Then asset account debit. Then after 1 year, the asset value is 220. 5 rupees is a loss. 20 rupees we are going to add it in the asset. Loss is there, no? 5 rupees extra means. And that 5 rupees loss will be added in the asset. Not debited to profit and loss account. You can check here. Okay.
And depreciation will be on now 220, no, for 5 years. 220 years, sir. 5 years means 44 rupees. Now SLM your method. asset is showing balance of 220 minus 44. 176 is the 166. balance. 176. Then asset account debit $4 into 3 rupees. 12 rupees. To 55 loan ka account 58. 12 rupees. 58. And your 176 plus 12 Yes, sir. divided by 4 will be the depreciation. 47. Correct? Yes, sir. Yes. Yes. And suppose if loan is borrowed, where to adjust this? If there is no asset other than depreciable asset, I have taken a loan, You have to directly adjust to P&L. cash account debit to bank loan. Yes, sir. So we will open FCMI TD account. Which account Okay. I am going to open? FCMI TD account. So now FCMI TD account balance is 20, correct? Divided by 5 Yes, sir. years. So 4 rupees will be the balance. 4 rupees will be written up to P&L. So what is the balance in FCMI TD? 16 rupees. 16 rupees. Then $4 into 3. 12 rupees. Again 12 rupees. So 28. 28 divided by 4 years. Yes. 7. 16 rupees balance is already there, no? Yes, sir. Plus 12 is added. So you left with? 28. 28 by 4, 7. Yes. Easy? Yes, sir. Can we take extra problems? Yes, sir. Should I give you time to think? Yes, sir. Read this question. Illustration 1. Classify the following items as monetary or non-monetary items. Inventories, trade receivables, investment in equity shares, property, plant No, and tell me, equipment. inventories is non-monetary or monetary? Inventory is non-monetary, sir. Trade receivable. Monetary. Investment in equity shares. Monetary. Investment amount is same as book value and market value? Sometimes it varies, sir. It varies. Varies, then it is non-monetary. And property, plant and Yes. equipment. That is non-monetary. एक गलत हुआ. Yes. You made a mistake in one. Next. Yes, sir. Solve this question. चलो फटाफट solve करो. Goods Goods purchase. purchased on 1st January 2001 for $15,000 at the rate 75 rupees. Exchange rate on 31/3/2001 74 rupees. 1 rupees was deduction is there, 1 rupee. Date of actual payment 7/7/2001 73 rupees. You are required to ascertain the last gain to be recognized for financial year ended 31st March 2001 and 31st March 2022. First we will do for 31st March 2001, sir. At that time 15,000 rupees gain, sir. Gain. 1 rupee is gain, no? Yes, sir. 15,000 rupees. And here is also 1 rupee gain. Gain in 31st March 2001. Yes, sir. So 15,000 P&L में 15,000 P&L will record purchase to creditors, then creditors to P&L, and then creditors to P&L to cash. Yes, sir. Yes. See, here you will record purchase to creditors. Yes. Then you will record creditors to P&L over here. Now my creditors balance is showing 74 to cash 73 to P&L 1. Yes. P&L 1 is income, sir. P&L is 1 is gain. Read the answer. General entries. Purchases account debtor 11 lakh 25. First read the provision. As per AS 11, the effect of changes in foreign exchange rate all
Foreign currency all transaction. currency transactions should be recorded by applying the exchange rate and date of transaction. On balance sheet date, all monetary items should be recorded at closing rate on the date of the settlement and balance sheet date. Exchange difference should be transferred to P&L account. So entries are Conclusion. Purchases account debtor to creditors account. range problem, range issue, For the range issue. Ayush, read second entry, beta. Ayushi, read second entry. Yes, please unmute yourself. Sorry, मैंने mute कर दिया आपको. Yes, हाँ, yes. second. Creditors account debit to exchange difference P&L account 15,000. Creditors account debit on 7/7/7/1. Creditors account debit to exchange difference P&L account to cash 73 multiplied by $15,000. Being creditors account settled in exchange of difference of transfer to P&L account. ठीक है. Easy. Yes, sir. Read question 3. Kaleem Limited borrowed US dollars 450,000 on 1/1/2021, which will be repaid on 31/7/2021. So Kaleem it is a short Limited, term or long run? Long run. it is a short term, sir. Short term, and short term then difference will be adjusted in para 46A as per para 46A or no? No, sir. Para No. 46A में सारे non-monetary वाले होते हैं. Long term. Long term. Yeah, long term. Yeah, long Para term. 46 is applicable for long term. Long This is term, very yeah. short term. So this is, yes. Now you borrowed the loan. Then on 1st Yes. January, then the rate is 49 on 31st of March. So you're in loss or profit? Sir, I am in loss of 1 rupee. 1 rupee. And 49 का 49.5 होगा तो वो 50 पैसा का भी लॉस है वो. loss. Yes. Yes. So what will be the entry? सर हमने Cash असेट account खरीदा debit तो to bank loan. या No, asset के बारे में कुछ या दिया नहीं. असेट नहीं, वो मेरा पहला वाला 48 पहला into 4,50,000. 40 लाख 4 लाख. लेट मी टेल. Then P&L account debit to bank loan. $1. FMCMI नहीं आएगा ना इसमें. शॉर्ट टर्म है ना ये. हाँ, शॉर्ट टर्म है ये वाला. तो FCMI TD नहीं आएगा. एंड डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट लोन अकाउंट डेबिट to bank and difference is P&L account. ओके. समझा? यस Check सर. these entries. Yes, read the entries. 1st January bank account debit to foreign loan account 450,000 multiplied by 48. 31st March exchange loss account debit, P&L account debit to loan account by 450,000. And on July 1st, the loan account debit by 2,20,50,000. Exchange loss account debit by 2,25,000 to bank account 2,22,75,000. ये अमाउंट कैसे आया? ये दोनों का टोटल लोन ओके सर. करेक्ट. हाँ सर, वो लॉस का भी ऐड हो गया ना पहले 1 सेटलमेंट ऑन 1st जुलाई और 31st जुलाई. 31st. So this question is of forward contract.
यस सर। मिस्टर, मैं रीड करूं सर? नहीं, all are forward contracts. हाँ. Now you both questions you have to do by your own. I'm giving you exactly 5 minutes. हाँ, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे. Do by your own both questions. चलो, ओके सर। 5 minutes. सर क्वेश्चन।
यस बेटा, सॉल्व किया, झालं का सगळं? कशिश टाइम देना है क्या नहीं देना है बेटा? एक 2-2, 3-3 मिनट, या डायरेक्टली आंसर्स लेने हैं? आयुष टाइम देना है ना बेटा? नहीं सर, आप ले सकते हैं। मेरा क्वेश्चन लेट तो थोड़ा सॉल्व हो गया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, बट मीन वाइल शुड आई गिव यू टाइम 2-3 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, या डायरेक्टली आई विल रीड द आंसर? नो नो सर, आप टाइम दीजिए। 2-3 minutes, not more than हाँ that. हाँ, I know this is नॉट मोर revision देन दैट। batches. Yes. Yes, sir. So the answer, correct answer is C. $1.40 and 42.5 respectively, and this difference means you can see 2.5 is a loss. यस Okay. सर। So what is your answer, beta? तो हमारा वन फिफ्थ हमने 75 लाख लिए थे। Hmm. हमने 75 लाख। 75? 3,000 हाँ वो lakhs rupees. 3000 लाख वो Okay. इंडियन करेंसी है ना, वो फॉरेन वो में Indian currency you कन्वर्ट। have to convert into foreign currency. Very फॉरेन good, beta. करेंसी। तो 75 लाख का हमने जो लोन लिया था, तो Hmm. हमें उसमें ओपनिंग बैलेंस वाज 40 रुपीज। एंड 75 into 40. आपने देखो, first you have to check rupees and this is rupees. So you have to understand that you have borrowed 75 lakhs dollars, asset account debit to loan, and beta then 75 lakhs dollars का rate 40 into 42.5 हो गया, मतलब sorry 2.5 से बढ़ गया. So you are in loss. And if you are in loss of 2.5 into 75, तो इट इज 187.5. 187.5। Very good, beta. You got the same answer. यस सर। And this is a long term asset, and therefore where to हाँ record this asset, where to record this? सर, इट विल बी इफेक्ट इन एसेट, उसकी इफेक्ट एसेट्स में आएगी। ये गलत है, करेक्ट है? हाँ सर। चेक कर लो, चेंज कर लो, इलुएट पटक से फोटो निकाल दो. एंड यस, 9 नंबर बेटा. सर 9 नंबर वाले में हमने 10,000 का लोन लिया हुआ है। So और loan taken 48 rupees. यस। So again we are having the depreciable asset. So in one case we will transfer it to P and L. यस सर। Okay. And what is our interest rate? सर हमारा 5%. इंटरेस्ट 5% है, तो हम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका आएगा 24,000। Yes. And interest is 20,000 into 5% into 51. And we will transfer it to P and L. ओके। And if सर para यहाँ पे 40, मैंने एक गलती की थी। यहाँ पे मैंने ये जो 5% का इंटरेस्ट है ना, वो 48 पे ले लिया था, तो अच्छा आप बिल्कुल समझ। ये भी गलत हुआ है, इधर डायरेक्ट से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालना था. यस, ओ, ये डालने की जरूरत नहीं थी. हाँ हाँ, कहाँ पे गलती की आपने? ये जो इंटरेस्ट था ना, तो वो मैंने इंटरेस्ट ओपनिंग में ले लिया। मैंने मैंने वो गलत किया। वो ओके. 31 मार्च में इंटरेस्ट है ना, हाँ तो हाँ हाँ, सो यू 48। मल्टीप्लाइड बाय 48 rupees यस। instead of 51. Yes, very good. 51। यस। So interest entry is also passed. And third option is not foreign currency. Then you will transfer this to FCMI और TD, you know? मैंने PNL लिखा था। No, FCMI TD. FCMITD। If ओके। loan is taken to finance the option and not for depreciable asset. स्टडी मैट में क्या किया था? स्टडी मटेरियल में। Check the answer. यस सर। This is new question added or what? नहीं सर, मेरे वाले में है। मुझे नहीं पता ये न्यूली एडेड है कि नहीं।
सो डायरेक्टली एफसी में वो एक ही एंट्री पास कीजिए, इंस्टेड ऑफ 2 एंट्रीज एक ही एंट्री पास कीजिए. शुड आई गिव यू सम एडिशनल क्वेश्चंस टू सॉल्व? Yes, sir. चलो. So now some extra questions. थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लू क्या? हाँ सर. यस बेटा, कॉम्प्लिकेटेड लू 6 क्वेश्चन है, बट इट विल हाँ टेक सर. सम टाइम. S22 को वी वोंट गेट टाइम देन. चलो फटाफट देखिए. इज गिविंग यू 1 बाय 1 क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए. USD 10 lakhs dollars, 53.8 is a spot rate, then 55 which is not the realization date, on balance sheet date है, and collection time 55.5 का. in the range है, range. Which rate should I consider? 53.8 spot date. Read कीजिए proper question. Okay, sir. Question 1. Foreign currency debtors at the end of financial year are USD 10 lakhs. Sales were recorded at exchange rate of USD 1 at 53.8 on a balance So sheet tell date me which is this rate? spot rate. Hmm. On the On balance balance sheet, sheet date rate is 55. And you are estimating that when we will collect these debtors, at that time rate will be 55.5 to 55.8. This will be a range. This is a future. yes. So should I consider this rate? No, sir. तो which क्योंकि rate हम I अपने स्पॉट रेट पे ही हम बस अपना सारा एंट्रीज फोकस spot करेंगे. rate हुआ बेटा, बैलेंस शीट डेट के बारे में देख रहे, पढ़ो एक बार शांति से. Okay. Yes, I will consider 55 only. That is the closing rate. Okay. Okay. But there is one exception for this, which is not given in the study mat. As per AS11, foreign currency debtors will be receivable. That is the monetary items denominated in the foreign currency should be reported using closing rate. But sometimes closing rate may not expect to realize on the collection date. Okay. अभी ये देखो, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है. Actually, such type of question is not there in study mat. In such case, this is the bare text provision. Relevant monetary item debtors should be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realized or required to disburse such item on the balance sheet date. आजकल क्या हुआ है? Sometimes we may ask you questions not from study mat. It might happen that we will ask you the provision. And this provision is very important. Normally, sir taught us it's a closing rate. But Yes. when you are not sure about to realize that rate on balance sheet date itself, so you should go by estimated rate and you can give the note also. Got the concept? Yes, sir. So here
I won't go with 55.5. I won't go with 55.8. I will go average of this 55.65. And sir, Okay. closing rate is not realized to be, it is given specifically in the question. And that's why we are not using 55 rupees. Got the concept? Yes, sir. Yes. Okay. मतलब closing rate. हाँ, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट था, नॉट इन स्टडी मैटर. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेना है ना बेटा ये क्वेश्चंस थोड़े अदर हाँ. देन स्टडी मैट. हाँ सर. पढ़ूं क्या मैं क्वेश्चन? यस. SS Limited purchased an equipment at a price of USD 1 lakh on 2nd April. Upon terms of credit, that price should be settled within 6 months from the date of purchase. The company capitalized the asset in terms of Indian rupees at a rate of exchange prevailing as on date of purchase. When the liability is settled, as per terms on 10th September, it incurs an additional amount of rupees 3,50,000 due to exchange rate fluctuation on the date of settlement. The said sum is charged off to P&L account. Comment. बेटा देखिए, you are going to settle the transaction within 6 months. When you bought that asset, $1 lakh on 2nd April, you capitalize the asset on the Yes. date of purchase. That is a spot rate. Correct. है? And when liability is going to settle, asset account debit to creditors, you pass the entry and you recorded Yes. your creditors on that transaction date, settlement date, and you have done this fluctuation, settlement of the creditors, difference will be charged to the profit and loss account. But obvious, para Yes. 46A is not applicable Yeah. because you have to settle this transaction within 6 months. Yeah. And therefore, whatever the treatment company has done is correct, that they transfer it to profit and loss account. Yes. This is a theory question. तो Yeah. स्टूडेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं. नॉर्मली दे हैव फियर इन माइंड कि अरे what is this concept? Okay, it is nothing but we already explained this concept. When the asset purchase, they capitalize the asset. So it's a correct treatment. At what rate? On the date of purchase. That is also correct. Purchase. Date of purchase. And when you are settling the transaction within 6 months, well, whatever the difference, you will transfer it to profit and loss account. Is it wrong? No. Correct. तो समझा आंसर? हाँ सर. तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. सर पढ़ूं मैं? 4,000 का 2.5, 4,000 लैक्स का रुपीज का है. हाँ, डिवाइड, ये हाँ. सेम था ना क्वेश्चन? हाँ सर, वो पहले वाले में कौन से 8th वाले में So था. yes, so company should use para 46A and then they should, whatever the loss, they will deduct, add it in the asset. Correct है? Yes sir. लॉस एडेड करना था एक्चुअली. हाँ. ठीक है, हाँ. तो ये आपको, ये सिंपल क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था स्टडी मैट का ही. नेक्स्ट. क्वेश्चन 4. सर मैं पढ़ूं ना? हाँ हाँ. हाँ. Note number 7 to balance sheet of SS Limited as on 31st December is as follows. The company has a large engineering contract with a foreign government, work to be carried out in foreign countries and payment to be received in dollars. The work was completed in the current year and the entire contract amount was duly recorded in the books of company at the prevalent exchange rate.
on the date of completion of the work. However, the payment to the extent of rupees 20 crores could not be realized by the foreign government because of the temporary foreign exchange crisis in that country. This 20 crores unrealized at the end, if converted at the year-end rate, would amount to rupees 20 crores 50 lakhs. Hmm. The company has adopted the follows and following accounting policies. In respect to foreign currency transactions, current assets and current liabilities are evaluated at the year-end rates. However, if there is a net loss due to exchange difference, the same is charged off and P&L account. But if there is a net gain, the sum is ignored in view of the prudence accounting principle of not recording unrealized gain due to exchange rate fluctuation. Comment on appropriateness of the above policy. You got this policy? हाँ sir. So company is recording losses, but company is not recording unrealized gain. So there will be no Yes. P&L credit. Is it correct? हाँ सर, प्रूडेंस में अगर हमारा लॉस होता है तो ही हम रिकॉर्ड करते हैं, वरना हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते. कुछ भी बोलते हो, हम लोग प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते. नहीं सर, एज पर प्रूडेंस हम सिर्फ फ्यूचर लॉसेस ही रिकॉर्ड करते हैं. मतलब एक्सचेंज डेट पे यदि आपको $50 का 48 हुआ तो आपने P&L को क्रेडिट नहीं किया था. नहीं सर. कुछ भी बोल रहे हो यार. See beta, if on balance sheet date you are in profit, are we not going to record exchange gain? See, dollar, Yes sir. $1, when you bought it, it is a 48, and on हाँ. balance sheet date, it is a 47. So I'm not crediting P&L. Yes sir, you need to credit. So I'm recording it, no creditors account 1 to P&L 1. Yes, yes. My purchases to creditor 48 and creditors to हाँ. P&L. I'm not recording this P&L on the credit side. I Yes, record only yes. P&L debit. नो नो, हम करते हैं पीएनएल को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा वही तो प्रॉफिट पूछा है हो. उन्होंने. That is only they ask you. ओके. If there is a gain, we won't record it. ये कंपनी पॉलिसी है. हाँ. तो इज इट करेक्ट दैट पॉलिसी? नहीं सर, तो हम अरे भाई रिकॉर्ड साहब, कर. आप ऐसे मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आओगे तो आप तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम के आप थोड़ा बेसिक लॉजिक तो यूज करो. क्या भाई नहीं करते क्या? नहीं सर, वो थोड़ा थोड़ा सा हाँ. क्वेश्चन गलत क्या था? ऐसा थोड़ी होता है. वी आर नॉट गेटिंग इट. क्रेडिटर्स एक्चुअली अनरियलाइज है, फिर भी वी आर रिकॉर्डिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट. नो, हम्म. थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप आंसर आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट वरी बेटा आयुषी, इट्स ओके. बट ऐसे यस सर. गूगली क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे आयुषी. यस सर. प्लेन इंग्लिश वाले एकदम सिंपल स्टडी मैट के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नाउ डोंट एक्सपेक्ट. या. हाँ. Question 5. SS Limited imported certain stock worth USD 60,000 on 30th June. On uh, 1 USD was as on date was 54. The Hmm. payment is made on 31st December when USD was 55.4. The stock is in hand and lying unsold as on 30th September when the company closes its accounts. Give journal entries under AS 11 if the rate of balance sheet date was 1 USD 53.85. करो, एंट्रीज पास करो.
चलो सर हम 3 minutes, 3 minutes you have. Pass entries. बिंदास करो. कॅन्सल झाल्या विथ रिझन मला त्याचं ग्रुपवरती हे पाठव सिक्युरिटी कॅन्सल झाले. कॅन्सलचा पण रिपोर्ट निघतो. पेट पूजाला फोन करून विचारून सिक्युरिटी ज्या कॅन्सल झाल्या तुम्ही करताना ऑर्डर नंतर त्या विथ रिझन कारण तू नसताना पण कॅन्सल तर कधी त्याच्यात कॅश घेतली तर आपल्याला झेपणार नाही ते तर सिक्युरिटी आता कॅन्सल करायची नाही असं ठरलेलं आहे आणि जर कॅन्सल करायची तर त्याचं रिझन त्याच दिवशी टाकायचं ज्याने कोणी कॅन्सल केलंय हे तू ठरवून घ्या आजपासून नियम. पण ते मागच्या महिन्याच्या त्यांना कॅन्सल रेकॉर्ड मध्ये दाखव आणि विचार मला की ह्या सिक्युरिटी का कॅन्सल आणि जीवनच्या ग्रुपवर आहे त्याच ग्रुपवर ते टाक. सर आज माग लागले सिक्युरिटी कॅन्सल का होतात त्याच्या रिपोर्ट मला हवे. ते चेक करायचे विचारायचे केवढी का कॅन्सल झाली का कॅन्सल झाली जेव्हा तुम्ही ऑर्डर घेतात आणि नंतर तुम्ही डिलीट करतात त्या केवढीची लिस्ट नाही आणि त्याचं विथ रिझन कुठल्या डेटला कॅन्सल झालंय आणि कोणत्या टायमिंगला झालंय ना तुम्ही त्याच्या टायमिंग आपल्याला माहिती आहे जीवन माहिती तर जिंकणार आम्ही काय कॅन्सल व्हायचं का समजा पैसे आपण घेतले कॅश आधी जसं 12,500 काला कॅन्सल अशा प्रकारची एवढीची ऑर्डर कॅन्सल यस बेटा क्या एंट्रीज पास किए परचेसेस टू सप्लायर कितने से पास किया कितना 60K multiplied by 54. 54 54. so what is your answer Sir, 32 lakh 324. 40,000 correct Yeah. first entry Yes. then your rate is 55.4. बैलेंस शीट डेट रेट कहां से है हाँ हाँ सप्लायर 54 का तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L Yeah. 9,000 गलत या सही आया सर गलत हुआ. गलत हुआ वेरी गुड then you will record your stock non-monetary so carried at the value fair value and we will assume 32 lakh 40,000 is the fair value so stock account debit asset side to trading account Okay. ठीक है Yes, sir. then supplier account debit P&L account debit on 31st December
to bank. Yes. Are you getting the Yes. same answer or different answer? No, this one I'm getting the same answer. वो मैंने वो क्लोजिंग 30 स्टॉक, क्लोजिंग हाँ एंट्री का आपका गलत हुआ। नहीं ठीक है। वो 30 सितंबर वाला है ना, वो हम्म 9000 वाला, हम्म। वो मेरा गलत हुआ था। कशिश क्या क्या हाँ गलत हुआ बेटा? सर मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं पास करी थी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग ये वाली मेरी मिस हो गई थी सर। इसको 32 मतलब 32,31,000 पे क्यों नहीं डाला हम लोगों ने किससे? गेन? ये वाली को, जो क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया वी है, विल ये एज्यूम वाली एट फेयर एंट्री। वैल्यू ओके सर। एंड फेयर वैल्यू विल एज्यूम एट कॉस्ट। ठीक है। ओके सर। यस सर। और एक क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ सर। लेट्स चेक। अलग क्वेश्चन है थोड़ा। 4 मिनट, 4 minutes यू हैव।
चलो हो गया बेटा, एक बार देख लीजिए, ठीक है, जितना किया है उतना देख लीजिए। What is the dollar total? $2 lakh. And what is the price on 2nd April? So what is my total rupees? So this is my creditors account. By asset 97,60,000 in the first year. Barabar? Yes. Immediately to bank, I paid 50%. $48,80,000 I paid. Correct? Yes. Next year का 3rd April, मतलब to balance carried down. Now I left with how many dollars? $1 lakh, no? 1 lakh. And what is my closing rate? 47.5. 1.5. 47 lakh 50,000. And what is my difference? Can I record 1,30,000 as my income? First year completed. I'll say yes or no. Yes. Hmm. Yes, sir. Now what is my second year? Buy balance brought down 47 lakh 50,000. Say yes or no. Yes, sir. I paid to bank. 25% of it. 25% means how many dollars? 2 lakhs into 25%. $50. 50,000. टोटल डॉलर का ना रे बेटा, 2 लाख 50 25 25, तो 2 लाख का 50% मतलब 1 लाख, फिर 50,000 एंड देन 50,000। हाँ, नहीं तो मैच 50,000. कहाँ से होगा? बहुत गलतियां मत करो रे एग्जाम में। टू बैंक, व्हाट इज द रेट? 47.71। से यस और नो। 47.41. Sir. 47.41। 41. 23 lakh। And what was your opening dollar rate? 47.5. So you are in profit or loss? Sir, To profit. P&L, $50,000 into 0.09, नो? One. Yes. ये दोनों का डिफरेंस, आई मीन प्रॉफिट। Yes, sir. व्हाट इज माय प्रॉफिट बेटा? Sir, हमारा 4,500 and two balance carried down. I left with how many dollars? 50,000. $50,000, and I will record 51.16. 50 years. 25,58,000, and then beta balancing figure is by P&L. अब ये 51.16 I will record by 47.5, मतलब 51.16 minus 47.5 into 50,000, ये 1,83,000 आना चाहिए। Otherwise you can take the balancing figure also. 47.5 is the initial rate and 51.16 is the closing rate. So difference will be transferred to P&L. Got the concept? And last May, buy balance brought down how much? 25 lakh Buy balance 8,000. 25 lakh 50. And what is the bank balance that you are paying? Bank balance 51.7. 50. $50 multiplied by 50,000 into 50. 51.77. 25 lakh 88,000. And now your account is settled, so it's a buy loss 30,000. Yeah. And why 30,000? Because your opening rate is 51.16 and you are settling this by 51.77. Sorry.
So you are in loss of 0.61, and 0.61 into 50,000, 30,000. Acha, sorry, 500. 30,500. 1,500. See the answer. 30,500 is the correct answer. If it is 30,500, yes. Yes. And this is how you are going to record. Depreciation will be recorded on the book value. 97,60,000 recorded by 3 years ka depreciation. Correct? Then Yes, we will sir. prepare creditors account, and at the end you will understood कि depreciation P&L में जाएगा 9,76,000 each year, and exchange difference first year में 1,30,000 income, second year Yes. में Oh, 1,83,000 minus 4,500, so net loss 178,500. Sorry, loss ये हाँ, and exchange difference डेबिट आएगा इधर, एंड लास्ट ईयर में भी डेबिट. सर कैन आई क्लोज माय ऑडियो? मेरे यहाँ पे वॉइस चालू हो गया है. ओके, इज इट सिंपल बेटा? यस सर, दिस वाज द कॉम्बो ऑफ ऑल द सम्स. यस. हाँ. कशिश. हाँ. यस बेटा. ओके, थैंक यू. कशिश, इजी था बेटा ये? यस सर. सर बस जनरल एंट्रीज में पास करी थी, सब सही आई है. सर सब 46A पैरा अप्लाई होगा क्या? क्योंकि मैंने वो मतलब यूज करा अभी 46. एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्ट्स आर सिंपल, because you are you are going to pay it off within 2 years, so they adjusted it in P&L, but if you go by the para 46A, it is also correct, ओके but सर. then your asset का balance पूरा different आएगा. ठीक है? Last ठीक है question सर. you want to try beta on this concept? यस सर. Yes, then after that forward contracts we are going to start. कैसे थे कशिश आज के क्वेश्चन बेटा? सर अच्छे थे क्वेश्चन, सब रिवाइज हो रहे हैं. थोड़े अलग थे. हाँ, चलो, इलस्ट्रेशन से थोड़े अलग थे. हाँ, इलस्ट्रेशन से थोड़े अलग थे, इसलिए मैं चुन चुन के लाया ये इलस्ट्रेशंस. ठीक है, करो. 4 मिनट. सॉरी.
बस देखिए, 12,000 deferred on payment, 6 equal annual installment means every year 2,000 rupees minus होगा. So in first year you left with 10,000, then 8, then 6, then 4, then 2, then 0. Abhi, when you entered into a transaction, what was the rate? And 63.09 means what is the gain? 1 rupee. Then 0.01. Then 63.09 minus 62.08. 1.01, sorry. Then 62.08 minus 60.56. 1.52 profit. Then 63.24 minus loss 2.68. 5.10 loss ना. And last में 1.7602 loss. Now tell me one में से you left with 2,000 तो आपने settle किया and you continue with 10,000, correct? So 2,000 ये आपका settlement and 10,000 is your unrealized. Say yes or no. Settlement मतलब realized and one is unrealized, correct or not? अभी इधर कितने डॉलर कंटिन्यू थे स्टार्टिंग में? $10,000. अभी कितने बचे? $8,000. 2,000 settled, 6,000 you continue. So 2,000 into 1.01, 2020 gain settlement का, and 6,000 into 1.01, 6060 is, sorry, 8,000 कंटिन्यू हुए ना. हाँ, यू कंटिन्यू विद 10,000, नहीं 12,000 था, इधर 10 से सेटल हुआ. 8,000 into 1.01, 8,080. अभी कितना बचा? $8,000. 2,000 into 1.52, 3040, 9120. अभी $6,000. उसमें से 2.68 into 2,000, 5,360 loss and 4,000, 10,720. अभी यू कंटिन्यू विथ $4,000. गलत है. 4,000 में से 2,000, 10,200 रियलाइज्ड और 2,000, 10,200 इज अनरियलाइज्ड. आगे 0 and 2,000 into 3,520. ठीक है, देखो आंसर. सी 2,000, 2,000, 10,000. Then you have 2020, 8,080, correct? 30409120, yes. 5,360 and 10,720. 10,200 to 10,200. And last one is 35,200. कौन सा इजी था, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये प्रेजेंटेशन ऊपर वाला इजी था ना? ठीक है, कशिश समझा क्या बेटा?
कुछ नहीं था, एक्सचेंज डिफरेंस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय डॉलर्स 2000 एंड रिमेनिंग। कशिश इजी था। रेज योर हैंड। हाँ, सर वो 31 मार्च 2017 मैंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो तो बिफोर है ना डेट। 31 कौन सा? 31 मार्च 2017 और मशीन परचेज 4 अप्रैल को है, तो इसलिए मेरे आंसर अलग आ रहे हैं। ओह सॉरी, इस क्वेश्चन 4 जनवरी है ना बेटा, करेक्ट है ना? ओह सॉरी सर, मैंने 4 अप्रैल अज्यूम कर दिया, तो मैंने बोल, सर पहले वाला ज्यादा इजी था। जो मैंने किया वो। हाँ सर। ठीक है, अंडरस्टूड नो? यस सर। शुड आई मूव टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटा? यस सर। कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ विल सी सम। यस, दिमाग काम कर रहा है ना आप लोगों का? यस एवरीवन? सर। अभी ऑप्शन भी नहीं है आपको। नॉर्मली इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? यस सर। नॉर्मली इजी पूछा गया है। In this batch, I am going to teach you forward contract entries also. Hedging means what, beta? Now entries I am going to teach you for this chapter. बेटा थोड़ा सा अलग है। और देखो, दिस इज अ क्विक रिवीजन, तो मेनी स्टूडेंट्स विल फाइंड कि सर इज गोइंग इन वेरी स्पीड। ये क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इट इन द रेगुलर बैच, तो थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो, और ये बैच में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रेगुलर बैच में सॉल्व करवा रहा हूँ। इफ यू सी, कशिश आपने कोई मेरा एक आध रेगुलर बैच का लेक्चर देखा क्या अभी May 25 का? यस सर, मैंने AS 28 का देखा था। S28। और AS 10 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। S10 भी देखा था। आपको बहुत हाँ ज्यादा सर। डिटेल में लगा रहेगा वो। हाँ, काफी डिटेल में था। हाँ, तो वो May 25 के बैचेस में, बिकॉज यूर बैच फर्स्ट बैच, तो वो थोड़ा सा वी वेर ऑल्सो वेरी न्यू इन दैट। नाउ वी कैन कॉल इट एज की एक्सपीरियंस्ड टीचर्स इन न्यू कोर्स। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, बट वी नो नाउ कि व्हाट क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में आस्क यू। तो वही क्वेश्चंस वी आर कवरिंग, एंड सम पॉइंट्स आर वेर नॉट देयर इन ओल्ड सिलेबस। इम्पेयरमेंट S15 दैट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन, यस सर। तो आपने वो थोड़ा सा, मैंने वो चेंज किया। इवन टुडे ऑल्सो आई हैव टेकन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक कि S22 को अपनों को टाइम मिलेगा। S22 यू कैन टेक इट फ्रॉम बेटा आवर स्टडी मैट, तो इसको 20 मिनट तो भी जाएगा, 20 से 25 मिनट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये डिटेल में लेना है या ओनली एग्जाम ओरिएंटेड दो क्वेश्चंस लू, और के एंट्रीज भी करवा के लूँ आपको थोड़ा सा अदर देन सिलेबस, कशिश जी? क्योंकि S22 को मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा आपको, तो आप बाद में रेगुलर बैच का डिटेल लेक्चर देख लेना, 25 नवंबर के अंदर हो जाएगा वो। सर सो एक बार और से पूछ लेते हैं, मतलब और अलग मिस हो बच्चों गया को था। पूछते, यस। तो ये खुशी बेटा, अभी जैसे क्वेश्चंस हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शुड आई गो विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एक्स्ट्रा एंट्रीज खुशी? Yes, sir. क्या S22 के ऊपर फोकस करना है आपको? No, sir. S22 regular batch से ले लेंगे. तो थोड़ा S11 पे ही ध्यान देना है अभी, एंड यू कैन फिनिश इट ऑफ योर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑल्सो। हाँ, बिकॉज नाउ हेजिंग एंड स्पेकुलेशन इज थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। आई ट्राइड माई बेस्ट बिकॉज इन स्टडी मैट वी डू नॉट हैव एंट्रीज,
और हो सकता है कभी कभी एंट्रीज भी आ जाए आपको हेजिंग स्पेकुलेशन की, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. तो प्लीज नाउ फोकस फॉर नेक्स्ट 20 minutes. शुड आई गिव यू ब्रेक और वी विल कंटिन्यू विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? सर कंटिन्यू सर। कंटिन्यू फॉरवर्ड यस कॉन्ट्रैक्ट. सर, तो मैं ब्रेक, कंटिन्यू। क्योंकि मैं ब्रेक देता हूँ 10-15 मिनट का आपको, और इसके बाद देता हूँ. एंड एज 20 नहीं तो 1:15 को आई विल लीव यू. ओके, एज 22 हम लोग डिटेल में नहीं, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर देंगे, थियोरी पार्ट. ठीक है, ओके फॉरवर्ड सर। कॉन्ट्रैक्ट विल डू अप टू 12:50 तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, 12:50 to 12:55. काफी डिटेल में हो गया ये स्टैंडर्ड. यस सर। ठीक है बेटा, नाउ फोकस. Please, now this topic is really we search many things for this hedging and speculation, and finally we got to know कि other than study material we completed some journal entries. तो मैंने बहुत सारे material reference लिए थे, and finally we came to conclusion of for journal entries, then it will be easy for you to understand through journal entries. तो hedging मतलब what is exactly the meaning? Speculation and hedging में difference क्या है? Hedging is like कि you are not doing anything, on the date of contract. You are not playing in any transaction. Suppose, for example, I entered. What is hedging? Hedging means I am minimizing my risk. What is the meaning of hedging? Hedging means minimizing my risk. Now, how I am minimizing my risk? Suppose today spot rate of $1 is 50 rupees or 83. Today's rate, I think 83 rupees hai. Now, this is a spot rate. Suppose on 1st January, I'm going to settle this transaction on 30th April. Might be due to war or something like that, I think I have to pay 95 rupees for $1 on the date of settlement. Okay, I borrowed something or I bought one asset and I have to pay for $1 95 rupees at the time of settlement. It's my, it's not actual figure, but these are my expectations. What I am thinking that I have to pay $1 ka 95 rupees. So what I have done, I entered today in a forward contract. I entered today in a forward contract. What is my forward contract? That today itself, on 1st January, I will pay to this bank 91 rupees. 95 से फिर क्या? 95, that is my expectation. Now on 30th April, actual rate is 93. This is my expectation. So expectation does not have any meaning. Still, I am in profit of rupees 2. Okay? Because I entered into the forward contract. How much I have to pay? I have to pay 91 rupees. And on that date, what is the rate? 93. Now, in hedging, these two rates are important, 83 and 91. And in speculation, 91 and 93 are important. Got the difference between two? Hedging क्या Yes, sir. करता है? Hedging spot rate or forward rate. See the difference. Amortize as expenses or income over the life of the contract. When I entered into transaction, rate was 83. And when I'm going to settle it, 93 is of no use. I'm going to settle it at 91. So what is my loss of total contract? 83 to 91, 8 rupees. What is the better loss? 8 rupees is a loss in case of hedging. Hedging. Are you getting the concept, beta? Yes, sir. But in case of speculation,
I'm not bother about 83 because 83 is of no use. I'm playing on dollar. At what rate I'm going to buy this dollar, beta? 91. And whole market at what rate they are going to buy? 83. 93. So I'm buying $1 at lower rate. So I'm in profit or loss? Profit. Profit. So this is my loss of 8. But in speculation, I will record 2 rupees as a profit. But what happens? When I'm settling the transaction, there is a 31st March on balance sheet date is there. And as there is a balance sheet date पे 31st March, therefore beta, I have to check entries on 31st of March. वहां पे पूरा problem है. You are getting this point? Yes, sir. Yes. So कौन से दो रेट hedging के लिए important है बेटा? Sir, spot rate और forward rate on the date of transfer. हाँ, अभी और मटेरियल में बेटा इतना ही दिया हुआ है. But if you read the bare text, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि क्या क्या हो रहा है. I have searched many, materials, many authors' materials, and finally I came to one conclusion that I will take one illustration from which I'm going to explain you this concept through entries. Entries को हम लोग देखेंगे. थक गया बेटा मेरा कंप्यूटर. वो बोल रहा है दिवाली में भी आप ऐसा परेशान करते हो मुझे. आज हिंदू नया दिन है, आज पूरे इंडिया को छुट्टी है और सर यहाँ पे क्लास ले रहे और ये बच्चे भी क्लास कर रहे हैं. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कंप्यूटर बोल रहा है ना कशिश? yes, sir. चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. Recognize the difference in profit and loss account. एक ही मिनट बेटा, एक बार ये रीड करो. सी बेटा, ये क्वेश्चन है स्टडी मैट का. On 31st March 2023, balance sheet is there. Please check rates. Yes. कशिश रेट क्या था? स्पॉट रेट सर $1 के लिए ₹52.2.02. फॉरवर्ड रेट For मतलब if you are going to settle it on 30th April, how much you are going to pay? today. हाँ, नहीं मतलब if you are going to pay, आप 30 अप्रैल को पेमेंट करोगे तो how much you are going to pay on that day? yes, That is sir. the forward rate of 3 months. नहीं समझ में आ रहा है क्या कशिश? नहीं यदि समझ मैं में 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा उसको बोलते फॉरवर्ड रेट.
जो आप डिसाइड कब करोगे? आज हम डिसाइड हाँ, करेंगे पर पेमेंट करेंगे 30 अप्रैल को, ध्यान में आ रहा है? 30th को। यस सर, कितना यस सर। एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले हो? सर 0.08। 0.08 की। हाँ, डायग्राम समझी गई? यस सर। हाँ, अभी 31 मार्च का स्पॉट रेट दिया है एंड वी आर सेलिंग द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी आर ट्राइंग टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट एट 52.10. और हम लोग ये सेटल कैसे करेंगे? मीनवाइल बाय सेलिंग इट at the rate of 52.18. There is one question based on this in study यस mat, सर। but entries are not given. Entries समझ लो. On 1st February, देखो, what you have to assume. Today, I will get the foreign currency at 52.02. कितने में मिलेगा? 52.02 में। Correct? यस सर। Today, I will get the currency. Why I am getting this currency? Because today I will pay to that person. We will assume actually we are not going to receive this currency. We will receive this currency on 30th April. On 30th April। We want this currency, we will pay at the rate of 52.10 on that date and we'll take a $1. But Yes, sir. today I will do this entry at the spot rate. So what is my loss that I'm going to book? So 0.08। Ha. This is the entry I'm going to pass, which is called as forward contract deferred premium. What is called as forward contract deferred Contract deferred premium? premium। I'm paying extra 0.08. जो करेंसी मुझे आज कितने में मिल सकती थी? 52.02 में मिल सकती थी। उसके वही लिए हम लोग करेंसी आज मैं कितने में 52.10 खरीदने वाला हूं? 52.10 में। एंट्री समझ में आ रही है? See Yes, these sir। words. Here it's a foreign currency and here it is a forward contract. फॉरेन करेंसी मिल सकती थी 52.02 से, पर मैं पे कितना कर रहा हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, 52.10। सो मैं एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा हूं भाई? 0.08। 0.08. अब ये 0.08 आई विल एमोर्टाइज ओवर 3 months. उसमें से 2 months इधर एंड 1 month इधर. समझी गई? यस सर। सो P&L में पूरा 0.08 डालूंगा क्या? नहीं सर, मेरा गलत हुआ है मतलब इधर. अरे यार, ऐक ना, बे 2 मिनट. हाँ बेटा, 2 मिनट. क्वेश्चन पण चुकीचा आहे बेटा. डेट्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूं. एक December 23 करता हूं और इधर
3 months कब कंप्लीट हो रहे हैं बेटा? The 1st of March. 1st of March 23. ठीक है बेटा. और सेल का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं. वी विल एज्यूम ऑन 31st of Jan. 31st of Jan को मैंने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया. यू आर गेटिंग दिस डायग्राम बेटा? Yes. ये मैं 31st Jan लेता हूं एंड 1st of March 2023 24. 24. हाँ. एंड फर्स्ट कितना Jan बेटा? 31st of Jan 24. ठीक है. यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया. हाँ. नाउ टेल मी. सो बीच में आया 31st December 2024. मैं एंट्रीज आपको लिख के देता हूं. सो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल. ठीक है रहने दो. देखो आप मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. I will take this question for you. हाँ ये देखिए. ये क्वेश्चन है. अभी डायग्राम देखिए. इसका डायग्राम मैं निकालता हूं. यस. कशिश बोलिए बेटा. When you entered for forward contract? 1st of December. 1st of December. बैलेंस शीट डेट 31st of December. और 1st सेल December. की We will assume 23 24 for simplicity. आप निकाल रहे हो ना बेटा? यस एक सेकंड ना बेटा. ये मैं क्लोज कर देता हूं. First December 24. यस सर. बैलेंस शीट डेट 31st December 24. 31st December 24. एंड Settlement date फिर 31st Jan. सेटलमेंट डेट 1st of March. 1st of March. ठीक है. यस सर. Forward contract date 1st March after 3 months. So first 52.02. 02. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट 52.10. जिसका सेटलमेंट कब होगा? The 1st 1st March of को March. I will buy this. Correct? Yes sir. And what is the rate on 31st of December? 31st $1. of December. $1 is equal to 52.15. 5. Or on 1st Jan, I sell $1 at 52.18. ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. एंड व्हेन Yes, आई एम sir. गोइंग टू सेल इट आई एंटर्ड फॉर. ये कब हुआ? 31st of Jan. मतलब एक महीने के बाद आई एम गोइंग टू सेल दैट डॉलर. व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दैट डॉलर आफ्टर 1 1 month. month. यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? Yes sir. देखो मैं $1 आज का रेट 52.02 है, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट टूडे. I will buy it on 1st of March, but I freeze the price. Freeze कर दिया मतलब today itself I entered into the forward contract. Whatever the spot rate price doesn't matter for me. I will buy $1 at 52.10. You are getting my point, beta? Yes sir. Now assume
assume on that date, assume $1 is equal to 53. I'm in profit, beta, Yes, because I sir. bought that dollar at 52.10. Assume this is a spot rate of this date. But I already freeze the price at 52.10. And when Yes, I sir. want to cancel the contract, I entered into the reverse contract. I am going to sell the dollar on 31st Jan. I want to cancel the contract. But how to cancel contract? Now you are buying it, but you freeze the selling price. Now what is the selling price that you freezed? 52.10 When you are going to sell that forward contract? on the forward contract date, 1st of March. 1st of March, I am going to sell that dollar. But when you freeze the price? On 1st December 24. 1st December. Sale, beta, sale price, sale. Yes, a sale price. Sale price when you freezed? On 31st Jan. You freeze the selling price on 31st of Jan. And when are you going to sell? Sale on 1st. Actual sale नहीं होगा. 52.18 से sale करोगे on this date, and you are going to buy at 52.10. So still you are in profit of 0.08. 0.08. Got the concept? Yes, sir. हाँ. So ये 3 अलग अलग प्राइजेस है. See, this is very complicated concept. आज का रेट 52.02 है. But I freeze the price after 3 months का. Today itself, 52.10. Now I have to wait till 1st of March. But suppose, meanwhile, I want to cancel the contract. How to cancel the contract? By entering into reverse transaction. So don't buy. Now you enter into sale transaction. So your contract will be automatically cancelled. Now when you are when you want to cancel the contract on 31st of Jan, so you will see the sale dollar price on 31st of Jan, not spot rate, forward rate, because both transaction will be settled on 1st March. ध्यान में आ रहा है आपको पूरा? देखो आज का Yes, डेट sir. है 1/12/2024. उस दिन रेट चल रहा है 52.02. आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट दैट रेट. मुझे 3 महीने के बाद ये डॉलर लेना है. कितने से? 52.10. आज ही फ्रीज कर दिया मैंने प्राइस. 31 दिसंबर को आ गया, बैलेंस शीट डेट आ गया. अभी मुझे 31 जनवरी को लगा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर गिरना है. तो बाहर गिरने के लिए मैं क्या करूंगा? तो एक तो मैं $1 डायरेक्टली इस दिन पे जाके खरीदूंगा. तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे बाहर निकलना है. तो मुझे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा. तो बाय का कॉन्ट्रैक्ट मुझे सेल में जाना पड़ेगा. तो सेल कितने में करूंगा मैं? $1 52.18 में. गॉट द कॉन्सेप्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा दिमाग में बैठ गया सबके? देखो बेटा कॉम्प्लिकेटेड है पर छोड़ेगा कोई नहीं है कॉन्सेप्ट. नाउ एवरीवन इज क्लियर कि फ्रीज द प्राइस फॉर 1st March in advance. Buy price I decided on 1st December, and when I want to cancel the contract, I enter into reverse transaction of selling it, and when I entered 31st Jan, and I freeze the price for 1st March. This is a simple transaction. Yes, this is the diagram. Now actual first loss is 0.08. I'm in loss. What is the entry? Foreign currency receivable. I will pass on 1st December. 52.02 to forward contract payable. This is a forward contract. I will receive 52.02. आज वो प्राइस से मुझे मिल सकता था डॉलर, पर मुझे $1 कितने में पे करना पड़ेगा? अभी ये डॉलर का $1 मुझे पे करना पड़ेगा. आज लेना पड़ेगा 52.02 से, और बाद में मैं $1 पे कर दूंगा. दिस इज द एजम्पशन. कि मैं आज $1 खरीद रहा हूं और
बाद में मैं $1 सॉरी आज मैं सेल करूंगा $1 और बाद में मैं, दिस इज द एजम्पशन, हाँ बेटा, दिस इज द एजम्पशन एंड दिस इज द रियलिटी. This is the reality that I am going to pay for $1 52.10. But S11 tells us to record the assumption. क्योंकि आपको ये रेट और इसका डिफरेंस रिकॉर्ड करना है एज अ प्रॉफिट और लॉस. तो मेरा लॉस कितना हुआ, जो डॉलर बेच के मुझे 52.02 आज मिलेगा, वही डॉलर मैं 3 महीने के बाद बाय करूंगा 52.10 से, देन ट्रांजैक्शन विल बी सेटल. नो, जो बेचूंगा तो खरीदूंगा, और बेचना है बाद में तो आज खरीदना पड़ेगा. सो आज खरीदना पड़ेगा तो मेरा एंट्री रिवर्स होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल टू फॉरेन करेंसी पेएबल. एंड इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज पेएबल देन फॉरेन करेंसी विल बी रिसीवेबल. गॉट द कॉन्सेप्ट? हाँ सर. लॉस कितने का हुआ, इसको कौन सा लॉस बोलेंगे, डेफर लॉस, 0.08 का. अभी आया 31 दिसंबर. 31 दिसंबर को मुझे ये दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा. अभी 52.08 का रेट कितना हो गया, 02 का रेट कितना हो गया, 52.15. मतलब कितने से बढ़ गया बेटा, हाँ 0.13 13 से बढ़ गया, बराबर है. सो $1 मुझे कितने रुपए पे मिलेगा, 13 पैसों से. अभी वो डॉलर का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नो, रिसीवेबल मतलब मॉनिटरी आइटम. तो मॉनिटरी आइटम, दिस इज अ फ्रीज प्राइस, ये फ्रीज किया हुआ है, सो आई कैन नॉट चेंज इट. बट रिसीवेबल इज अ मॉनिटरी आइटम. तो मॉनिटरी आइटम कितने से बढ़ गया, 0.13. व्हाट इज दिस अमाउंट, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल. हाउ आई कैलकुलेटेड दिस बेटा, 52.15. दिस इज अ स्पॉट रेट. ये स्पॉट रेट पे दिखता है हमेशा, minus 52.02, and I'm in profit of 0.13. Got the concept? अरे हाँ या ना. एंड डेफर्ड को मैं माइनस करूंगा, डेफर्ड लॉस जो था 0.08, उसमें से 1 मंथ इज कंप्लीटेड नाउ, दिसंबर ईयर एंडिंग, एंड P&L अकाउंट को डेबिट दूंगा. 0.08 मतलब 0.027. आई एम गोइंग टू बुक दिस 027. I am going to book this. Got the concept? Yes, sir. हाँ जी. अभी कौन सा डेट आया बेटा, 31 जैन. अभी 31 जैन को आई विल डेबिट बैंक अकाउंट. अभी ये बैंक अकाउंट मुझे दो जो अमाउंट मैंने फ्रीज किए थे, फ्रीज अमाउंट कौन से थे बेटा, 52.10 and and 52.18 52.18 फ्रीज अमाउंट. तो मुझे उसका पैसा I will get from the contract 18, and this is my sale freeze contract, and this is my freeze contract ka buy contract 52.10. So how much in my bank account I will get beta, 0.08. 0.08. Now tell me whether now I have to pay for forward contract payable amount jo tha. So I will cancel this liability, no, Yes, sir. by giving debit. So forward contract payable I will cancel. What is the payable amount beta, 52.10. 52.10. For cancellation, or that they will give me difference amount because I cancelled my contract. To foreign currency receivable account cancel कर दूंगा, foreign currency Yes, sir. receivable, which is shown at 52.15 on the balance sheet date, Yes, sir. and remaining amount I will transfer to P&L account.
0.08 plus 52.1 minus 52.15. How much? 0.03. 0.03. And on the same day, I will transfer that remaining deferred loss 0.08 into 2 by 3, which is still remaining. Zero 533. हो गया खत्म, सब अकाउंट कैंसिल हुए। अभी का एक्चुअल वाला सभी अकाउंट कैंसिल हो गए। फॉरेन करेंसी पेएबल इधर कैंसिल हुआ एंड फॉरेन करेंसी रिसीवेबल इधर कैंसिल हुआ। All transactions are cancelled. See, now if you go by the institute study mat, okay, मैं आपको दोनों भी बताता हूँ। इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में क्या है, यू रिकॉर्ड ओनली द डिफरेंस ऑफ 52.02 एंड 52.10 का डिफरेंस, दैट इज 8,000 बराबर है 0.08 into how many dollars are there? You have $1 lakh. So $1 lakh into 0.08, 8,000 rupees. 8,000 में से 2,667 इधर एंड 5,333 इधर। बस इंस्टीट्यूट इतना ही देता है स्टडी मैट में। बट इफ यू गो बाय द बेयर टेक्स्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि अप टू 31st December we are recording 0.3 credit income and 0.027 debit, ठीक है। एंड on 31st of Jan 0.03 credit and 0.0533 debit. So net effect if you go 0.13, 0.027, so 0.103 credit net effect, and on 31st of Jan 0.03 credit 33, so 0.0233 debit. And if you go by this net effect, 0.023 minus 0.103, 0.08 debit. सॉरी, डेबिट है या क्रेडिट है? हाँ, 0.08 क्रेडिट, नेट इफेक्ट 0.08 क्रेडिट, एंड वी आर इन प्रॉफिट बिकॉज 52.10 and 52.18, so we are in profit of 0.08. We are in profit of 0.08, but different years, different profit. Different years, different profit. Same sum is there in the study mat. I will show you. Same question is there. Or see 1st December. So in study mat, we have only these two rates which are freezed, 0.08 into $1 lakh. Only 8,000 profit is recorded, but बस इतना ही दिया है कि record 8,000 profit. But how to divide this 8,000 profit over the period is not given. और इसीलिए बेटा मैंने आपको पूरा ट्रांजैक्शन बताया कि हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइड दिस। समझ में आया कि आपको कैसे डिवाइड करना है? हाँ Yes, बेटा, sir. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज 8,000 ऑल्सो वी आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग प्रॉफिट,
But 8,000 profit, they on in Institute Mat only freeze amount का difference लिया गया है. But only freeze amount का difference लेना means divide over the period होगा क्या बेटा? और divide spot rate भी consider करने पड़ेंगे. यस सर. हाँ, बताइए. हाँ हाँ सर, कंसीडर करने पड़ेंगे क्योंकि वो 2 पीरियड्स के बीच में डिवाइड होगा ना. यस, ये ध्यान में रख. एंड स्पेक्युलेटिव होगा तो यू विल कंसर्न अबाउट दैट लास्ट रेट 53 and 52.10. Okay, so forward contract asset is receivable because you are in profit. 53 rupees में आपको डॉलर मिल जाएगा on 31st of December. Assume 31st December को रेट 53 है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 53 रुपीज है. सो इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट. मीन्स ऑन 31st December, if you are going to say buy that dollar, you will get 53 rupees. You have to buy it at 53 and you already entered with 52.10. तो क्या प्रॉफिट हुआ आपका? 53 minus 52.10 means you are in profit of 90,000. Okay, यस सर. but you cancel the contract and बैंक में आपको 8,000 रुपया मिला, 90,000, and your loss is 82,000. So ultimately 90,000, your loss is 82,000. So ultimately you are recording 8,000 directly if there is a speculation. Speculation में foreign currency receivable you never consider. You consider direct forward contract receivable. क्या consider करते हो आप लोग? Forward contract receivable and forward contract payable. आया समझ में? यू रिकॉर्ड ओनली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ओनली डिफरेंस ऑफ दैट रेट. रिसीवेबल इसमें एंड डायग्राम पेबल कैसे बनेगा? आई विल शो यू द डायग्राम. $1 का स्पॉट रेट कितना था 1 दिसंबर को? 52.02. चलो फिगर्स को याद करते. फ्रीज कितने पे किया? 52.10 एंड फ्रीज मतलब $1 व्हेन यू आर गोइंग टू बाय on 1st of March. 1st of March. इसकी अमाउंट आपने फिक्स की. 31st दिसंबर को स्पॉट रेट कितना था? 52.15. हाँ, और इधर $1 का बाय का जो रेट था, सॉरी मैंने 53 आपको इधर का दिया था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक. इधर का जो बाय रेट था ना 31st दिसंबर का, 31st दिसंबर का, इफ यू आर गोइंग टू फ्रीज दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1st मार्च, मतलब कितने महीने का फॉरवर्ड? ये 3 मंथ्स का फॉरवर्ड था. हाँ, ये 2 मंथ्स का बाय फॉरवर्ड है. 2 मंथ्स का बाय फॉरवर्ड. एंड 1st जनवरी को यू एंटर इनटू सेल फॉरवर्ड 52.18 और सेल $1. But when you are going to sell $1 after 1 month. So these are your forward contracts. Spot rate of no use. अभी आपको देखो $1 52.10 का 53 हुआ, करेक्ट है? मतलब जो डॉलर आप 52.10 में बाय कर रहे हो वही 1 महीने के बाद कितने में बाय करना मिलेगा? वही डेट का 53 में. मतलब आपको तो 52.10, इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट. हमने मार्केट के ऊपर लाया. मार्केट के ऊपर कितना हुआ उसका रेट? 0.1, मतलब आपका 53 मतलब कितना बचा? 0.9. 0.9 यू आर इन प्रॉफिट, नो? यस. सो टू P&L में कितना हुआ? हाँ, तो ये 90,000 का आपका फायदा हुआ. एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको पैसा मिलेगा वो बैंक से, क्योंकि वो आपको 53 रुपीज में डॉलर के बदले में 52.10 देगा, तो वो आपको 90,000 रुपए देने वाली है. 90,000 क्यों? $1 lakh मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 90,000. बट नाउ यू सेटल्ड इट. आपने तो 52.10 का वादा किया था और आपने 52.18 में सेल किया, तो आपको बैंक कितना रुपया देगा? 8,000. दिस इज एक्चुअली ओनली ऑन पेपर एंट्री. आया समझ में? एंड नाउ यू कैंसल योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल which on paper you recorded. That account has to be cancelled, no? And balancing figure you will transfer it in profit and loss account. 82,000.
So 90,000 you booked in the last year and 82,000 in the current year loss. So ultimately net effect is 8,000 and 8,000 is profit. But see, 8,000 profit is divided in two parts at 90,000 and 82,000. 82,000. Speculation mein your loss will be different for different years. Ultimate effect is 8,000 profit. Ultimate effect kya hai? 8,000 profit. 8,000 profit. But in speculation, 90,000 and 82,000. Got the Yes, concept? Yes, sir. समझ में आ रहा है? और एक बार Yes, शांति से फॉरवर्ड का बता दूं क्या? एक बार हेजिंग पूरा दिमाग में डालू क्या? वन मोर टाइम हाँ या सर, बैठ चुका है? बैठ चुका है. एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन. ओके सर. हाँ देखिए फटाफट डायग्राम. नाउ यू ओनली टेल मी एंट्री. हाँ सो अल्टीमेट प्रॉफिट दोनों भी मेथड में कितना दिखेगा? 8,000 ही 8,000. दिखेगा. एक में 90 लॉस, 90 और प्रॉफिट, 82 लॉस. 82 नाउ विल डू loss. फॉर हेजिंग. Speculation. चलो हेजिंग में. Hedging. अरे Hedging. हेजिंग है, स्पेकुलेशन कहां से हुआ? $1 $1 52.02. 52.02. Increased amount फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सर 52.10. कितने मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? 3 months का. 3 मंथ्स का बाय और सेल. बाय बाय $1 52.10. 52.10. Here 31st 52.15. December $1 52.15 is a spot rate. On this Yes. forward contract rate, now again buy contract ka. How many months? 53. 2 months. 2 months. $1.53. In hedging, whether you are using mark to market concept, No, sir. no. So hedging mein no use. No use in hedging because mark to market concept is not used in hedging. Where you use this mark to market concept? Speculation. So speculation mein this date is also important. And in Yes, hedging, sir. this rate is important. Yes, sir. हेजिंग में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. स्पेकुलेशन में स्पॉट रेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली फॉरवर्ड रेट्स आर इंपॉर्टेंट इन स्पेकुलेशन. नाउ ऑन 1st January you are going to Sell. you are going to sell this contract, forward contract, but this sale is on that date or after 1 month का forward contract. So 1 month का forward contract. 52.18. Now what are the entries on this date? Foreign Sir, currency receivable. How much foreign currency? Actually not receivable. This is just on paper entry, assumption. Yes, sir. Actually we are not receiving anything. But for giving debit and credit, because we have to record it by these two amounts ka difference, so we are recording receivable and forward contract payable. Foreign currency receivable at spot rate and forward contract I want to buy $1 and pay. How much amount I'm going to pay? Forward contract payable 52.10 amount pay करना. 52.10. And what is my deferred expenditure? Sir, deferred expenditure 0. Deferred loss. 0.08. Deferred loss. That is my deferred loss. 0.08. अभी आएगा 31st December. 31st December को first I will take spot rate का difference. Foreign currency receivable ना, because 52.02 52.15, so spot rate receivable की amount बढ़ गई कितने से? 0.13. I mean profit to P&L 0.13. और deferred की entry P&L to defer 0.027. So ultimately कितना हुआ? 0.13 minus 0.027. तो मैंने कितने से क्रेडिट किया? 0.103 credit. 0.103 credit. Got the concept? Yes, sir. 0.13 minus 0.027. P&L debit, P&L credit. So credit is more than debit. कितना हुआ? 0.13 minus
0 to 7. ये एंट्री एग्जाम में नहीं करना है, बट जस्ट शोइंग यू डिफरेंस ऑफ दिस एंट्रीज. मतलब अल्टीमेटली मल्टीप्लाइड बाय 10.103, मतलब 10,300. 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 10,000, सॉरी 13,000 माइनस 2667, 10,333. 10,333 क्रेडिट होगा अल्टीमेटली 1 लाख. और ये किया तो इधर Yes, 13,000 से क्रेडिट आएगा ना भैया, और यहाँ पे आपका 2667 से डेबिट आएगा 8,000. सो अल्टीमेटली $1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो आया Yes, समझ sir. में, $1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो. हाँ, अभी सबसे पहले मैंने बैंक में मेरा कितने पैसा ले लिया, 52.10 एंड 52.8, मतलब 8,000. करेक्ट. फॉरेन Yes, sir. करेंसी रिसीवेबल आई वांट टू कैंसल. Yes, sir. I will cancel it by 52.10. 52.15. अरे 10 कहां से, फॉरेन करेंसी. Oh, yes, sir. 1, sir. एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेबल डेबिट होगा. पेबल डेबिट बाय विच अमाउंट, Payable 52 debit 52.10, sir. 108 कहां से रे, ये अमाउंट ना अभी. एंड टू पी एंड एल देखो, सॉरी 8,000 मतलब 0.08. 0.08. हाँ, So, P&L में 0.03 profit. 0.03 प्रॉफिट. दैट इज प्रॉफिट हुआ तुम्हारा 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 3,000 से क्रेडिट. 3,000. और डेफर्ड Yes, वाला कितना बचा था, P&L टू डेफर sir. P&L to 0.08 defer into 2/3, 0.5333. 33. So 0.0533 debit and 0.03 क्रेडिट. मतलब मैं अल्टीमेटली लॉस 5333 बोलू क्या. Yes, sir. So 5333 लॉस एंड 3,000 प्रॉफिट क्रेडिट, और ये डेबिट. तो अल्टीमेटली डेबिट कितना हुआ, 2333. 2333. एंड नेट इफेक्ट क्या आया, 8,000 0.8. क्रेडिट. 8,000. But 8,000 credit, how we have divided in hedging? 10,333 credit, 2,333 debit. Debit. So ultimately 8,000 credit. Credit. And in case of speculation also 8,000 credit. But what was the ratio? 90,000 and 82,000. 1,000 loss. So what is the difference? Here we consider spot rates. किसमें spot rate देखते हैं हम लोग, Hedging में. हेजिंग में. और किसमें स्पॉट रेट को इग्नोर करते हैं, Speculation स्पेकुलेशन. में. एंड स्पेकुलेशन में वी कंसीडर Mark to forward market. rates mark to market 2 months. Whether we consider that forward rate 2 months का बाइंग रेट Yes. मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट हम लोग हेजिंग में करते हैं क्या, नहीं sir. नहीं. वी नेवर डू हेजिंग में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्क टू मार्केट. वी डू स्पॉट रेट का अकाउंटिंग. ठीक है, समझ Yes, में आया sir. बेटा अभी पैराग्राफ. Yes, sir. आई थिंक पैरा 36 इज देयर. वेट एक मिनट ना, चेक कि हम लोग ये पैराग्राफ रीड करते हैं. बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था कशिश.
सर बड़ा समझ में आ गया. Read this, beta. What happened? सर वो ब्लर आ रहा है. हाँ पता है. Read this, beta. Yes, sir. Forward exchange contracts. Para 36. An enterprise may enter into a forward exchange contract or another financial instrument that is in substance a forward exchange contract which is not intended for trading or speculation purposes मतलब to क्या? establish the amount of reporting current currency. Not intending for speculation मतलब hedging. मतलब hedging वाला. To establish the amount of reporting currency required Hedging. or available on the settlement date of transaction. Okay. The amount of the reporting currency required or available on settlement date. Okay. तो हम लोग कौन सा फॉरवर्ड रेट लेंगे? सेटलमेंट डेट का. The premium or discount Settlement date. arising on inception of such forward contract. Premium or discount. Now, what is the premium or discount? That is the difference between spot rate and forward rate should be amortized as expenses or income over the life of the contract. यही किया ना हमने? Yes, sir. An exchange difference on such contract should be recognized in the P&L on reporting period. Reporting period means 31st December in our example. When exchange rate changes, any profit or loss arising on cancellation or renewal of the forward exchange contract should be recognized as income or expenses for the period. वही किया ना हमने? Yes, sir. The risk associated with changes in the exchange rate may be mitigated, means reduced. Mitigated means reduced by entering into forward contracts. Any premium or discount arising at the inception मतलब starting में, मतलब forward contract payable and forward receivable. foreign currency receivable is accounted separately from exchange differences on forward exchange contracts. The premium or discount that arises on the entering into contract is measured by difference between the exchange rate at the date of inception, that is a spot rate of the forward exchange contract, and forward rate specified in the contract. ठीक है, मतलब स्पॉट रेट से और फॉरवर्ड रेट से दोनों का डिफरेंस लेना है. And the exchange difference in forward exchange contract is the difference between the foreign currency of amount of contract translated at the exchange rate on the reporting date or settlement date where transaction is settled during the reporting period, and the same foreign currency translated at the date later of the inception of the forward contract on last reporting date. इसलिए हमने 31st December को क्या किया था? We have taken the डिफरेंस. नो, हमने डिफरेंस लिया ना बेटा. A gain or loss on the forward exchange contract to which paragraph 36 does not apply
should be computed by multiplying the foreign currency amount of the forward exchange contract by the difference between the forward rate available at the reporting rate for the remaining maturity of the contract. मतलब para 36 is not applicable, मतलब क्या? Speculation. So Speculation speculation with we have considered only forward rates, no, and forward rate of last used to measure gain or loss for the earlier period. इसलिए हमने mark to market किया था, देखो. yes sir. हाँ, the gain or loss also computed should be recognized in the statement of P&L for that period. And the premium or discount, मतलब हम लोग उसमें spot rate को consider नहीं करते हैं, is not recognized separately. Got the concept? तो 38 और 39 पैराग्राफ sir. ये स्पेक्यूलेशन के लिए है. सो वी नेवर कंसिडर स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड Rate. इन स्पेक्यूलेशन, बट वी आर डूइंग ओनली फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस. फॉरवर्ड हमने ओनली फॉरवर्ड रेट कंसिडर किया, स्पॉट रेट को देखा ही नहीं हमने. कौन से इसमें? स्पेक्यूलेशन. Speculation में. आया क्या बेटा समझ में आपको? Yes sir. बस बेटा ये ऐसा बढ़िया समझ पैराग्राफ में आ दिया गया. है, इंस्टीट्यूट ने बाकी कुछ भी दिया नहीं है, बट आई होप now you are clear with this transaction कि एग्जैक्टली क्या है. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आपको हम लोग एंट्रीज नहीं पूछेंगे, बट बेटा अल्टीमेटली हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सपोज स्पेक्यूलेशन का बिजनेस का आंसर आया, तो स्पेक्यूलेशन यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट इन 2 years मार्क टू मार्केट करके. एंड इन केस ऑफ हेजिंग आपको ओवरऑल प्रॉफिट का आंसर देना है. इट इज टू बी डिवाइडेड ओवर द पीरियड. बट कौन से साल में कितना ये पूछ ही नहीं रहे हम लोग आपको, पर गलती से आ गया कि पास जर्नल एंट्रीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा ना हो कि ये कॉन्सेप्ट लिया नहीं था. ओके, Yes sir. वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल. आई वोंट से कि एग्जाम्पल आपको आएगा ही करके, but this example will definitely clear all your concepts, doubts regarding forward contract. Many students find it very difficult. 99% students will leave this chapter in option, that forward contract. They will just note down the difference. ये ऐसा question आया तो रट लो. But now you got the entries बेटा. Yes sir. साई किरण जी, कुछ समझ में आया? बहुत ज्यादा ही समझा? आया सर, समझ में आया. Is it difficult or easy? थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अंडरस्टैंड. Yes, understood. And Ayushi? सर समझ में आया, पर डिफिकल्ट बहुत है, बट बेसिक सारा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में See, I will just ask you some questions. एकदम basic level. Tell me, in hedging, spot rate is important or not? यस. हाँ. And what is the entry that you passed? इन हेजिंग हम जो इनिशियल जब हमने वो Spot लोन rate लिया की होता है. entry आपने, हाँ, suppose spot rate. I want to buy dollar, तो it's a Yes. payable or receivable? पेबल. Payable. अरे डॉलर बाय करना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज पेएबल एंड फॉरेन करेंसी इज रिसीवेबल. फॉरेन करेंसी रिसीवेबल बाय विच रेट? स्पॉट रेट. एंड पेएबल बाय द मार्केट रेट, वो जो उस फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड रेट. हाँ. एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिफरेंस इज कॉल्ड एज defer loss. deferred loss. Yes. And defer loss you divided over the 1 month and 2 months. Yes. Okay. हम या फिर उसके बाद ऑन 31st ऑफ डिसम्बर ऑन बैलेंस शीट डेट आप लोग क्या करोगे? स्पॉट रेट का डिफरेंस लोगे. हाँ. स्पॉट रेट का डिफरेंस विल बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. स्पॉट रेट. स्पॉट रेट बेटा, स्पॉट रेट. सर आज बहुत कंफ्यूजन हो गया है. अरे स्पॉट रेट मींस फॉरेन करेंसी, नो? हाँ. स्पॉट Foreign. रेट मतलब फॉरेन करेंसी. यू आर इन प्रॉफिट. Yes. Yeah. हाँ. Foreign currency and that P&L account debit to that deferred 0.08. Khatam. Yes. तो फॉरेन करेंसी. And now you are going to sell this contract.
And when you are selling this contract, you are in profit. Yes, we are in profit. So bank Fine. account debit and two Yes. accounts you are going to cancel. Payable will be Yes. debited and receivable Debit. will be credited. Credited. And balancing Yes. figure will be in P&L. Yeah. And then that deferred expenditure, whatever we have written off. Yes. Only 1, 2, 3, 4, 5. 5 entries you have to pass. Okay. And in speculation, only 2 entries you have to pass. Yes. Sell वाला. थोड़ा अभी इतना 1 घंटे से मेहनत किया है तो डू नॉट लीव दिस पार्ट इन ऑप्शन नो. यस सर, ये पूरा लेक्चर दोबारा से देख के फिर अच्छे से समझ के आधा तो समझ में आ गया है, बट पूरा कॉन्सेप्ट कैसे ठीक है, अच्छे से सपोज बाय आया हार्ट समझ, कर लूं. यस. नो प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए. सो वी विल वाइंड अप द सेशन, इट्स ऑलरेडी 1:30. तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन. यस, एनी क्लोजिंग रिमार्क खुशी जी? यस सर. एनी क्लोजिंग रिमार्क? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो दोबारा देखना पड़ेगा. बट थोड़ा थोड़ा तो समझा क्या नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा समझ आया. हाँ, तो अच्छे से कर लेना. टेक्निकल था बहुत ज्यादा, नॉट इन स्टडी मटेरियल, तो बहुत ज्यादा टाइम भी मत देना. हार्डली 20 minutes to understand and then solve that question. But now बेटा आई थिंक हेजिंग एंड स्पेकुलेशन ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ रहेगा. कशिश बराबर है ना बेटा? यस सर. कि हेजिंग स्पेकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगा. अभी आपको दोनों का डिफरेंस समझेगा. मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो इतनी मेहनत जो हमने की है तो वैसा मत करो कि एकदम ही ऑप्शन में रख दिया. तो हेजिंग स्पेकुलेशन के आंसर्स देख के उतने तो भी लिख के आओ कि ये हेजिंग है. हेजिंग कैसे समझ में आएगा? इफ यू बॉट सम मशीनरी then you enter into the forward contract, then it is a hedging. And if without buying machinery you have entered into forward contract, then it is a speculation. तो प्रॉब्लम देख के यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस. प्रॉब्लम देख के आप लोग इजीली देखो. यहाँ पे आपने क्या किया था? 3 months Mr. A bought the contract, nothing is given. तो illustration 5 क्या हुआ? This is a speculation contract. स्पेकुलेशन. And यही क्वेश्चन में बेटा आप लोग यदि नो, हाँ, सिनारियो बेस. ये किधर तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या? चेक करना. सो हमारे पास तो सिर्फ हेजिंग का ही क्वेश्चन है, सॉरी स्पेकुलेशन का ही क्वेश्चन है. फिर भी मैंने हेजिंग का क्वेश्चन आपको बता दिया. ठीक है, कर लोगे बेटा? सपोज आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डोंट वरी. थोड़ा सा पता होना चाहिए था. इन रेगुलर बैच में आई हैव नॉट टेकन दिस कॉन्सेप्ट. सो हेजिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, इज नॉट देयर इन योर स्टडी मैट. तो ठीक है, बट इंस्टीट्यूट समझाती है तो आ जाता है तो आप कर लेना. ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सर. यस, बाय सर. बाय. यस, थैंक यू.